Yes. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. As we explained the first part of this diary, that is written by Anna Frank, we knew that she has no friend. Anna Frank is completely alone. There is nobody to be accompanied by Anne Frank. She is trying to make a relationship of friendship with some boys and girls, but she is unable to do so because there is no mutual understanding with each other, and each time she tries her best to have a talk with them, but she does as usual, making ordinary things everyday life. So she is unable to make friends. But this time she is trying to write a diary. She wants to write everything in the diary so that she would be happy with the moment that she passed memorizing and remembering when she'll read the diary in the future time. What happens next? Let you know through these paragraphs further. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, since that time when no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, and I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Okay, Anna Frank has given a brief account, the brief sketch of her life in the diary, so that it would be easy for all the readers to understand what she wants to write in her diary. चीज़ें बहुत ही सरल और आसान भाषा में उन्होंने लिखा है अना फ्रैंक ने, और much as she disliked doing so, she doesn't want or she doesn't like to write everything about her life, okay, though she has given a brief sketch of her life. ये उनको पसंद नहीं है ना, फ्रैंक को ये चीज़ नहीं पसंद है कि वो सारी चीज़ों को प्लंग करे, उसमें राइट करे, या लोगों को अपनी सीक्रेसी बताए, प्राइवेसी बताए. ये चीज़ें अने फ्रैंक को पसंद नहीं है. हाउ एवर, for the better understanding of all the readers, she has given provided a brief sketch of her life as introduction. Okay, I think it would be clear to everybody. Next, my father, the most adorable father I have ever seen. Okay, Anna Frank writes about her father that her father is a most lovable, okay, adorable. Adore means love. Very fantastic father of hers, and she has ever seen. I mean, उनके जो पापा हैं वो बहुत अच्छे हैं. You know, every child's father is adorable and lovable for the child. हर बच्चे के पापा उसके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं. Did not marry my mother until he was 36 and she was 25. It means she writes about the moment of her parents' marriage, that they got married with each other when my father was at 36-year-old and my mother was 25. पापा 36 के थे और मम्मी 25 मीन्स 25 साल की थी, तब उन्होंने एक दूसरे से शादी किया था. माई सिस्टर मार्गॉट. Margot is the name of Anne Frank's sister, who was born in Frankfurt in Germany in 1926. Okay, this is the account about her family. She introduces about her family one by one. I was born on 12th June 1929. I mean, Anne's sister, Margot, was born in 1926. Where was she born? She was born in Frankfurt in Germany, as you could see on the screen. Anne Frank was born on
12th of June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. I mean, she left Frankfurt when she was 4 years old. जब वो 4 साल की हो गई है ना फ्रैंक, उन्होंने फ्रैंकफर्ट को छोड़ दिया. My father emigrated to Holland in 1933. Okay, her father emigrated. He left Frankfurt and be shifted in Holland. ये कब की बात है? 1933 की बात है. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I was sent to Ashen to stay with our grandmother. Okay, my mother Anna Frank writes about her mom that she also went with my father to Holland. Okay, but I and my sister both were, uh, sent to stay in Achen. Achen, it is the name of a place, to live with our grandmother. दादी माँ के साथ रहने के लिए हम लोगों को भेज दिया गया. ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हम ये जानेंगे कि अना फ्रैंक ने अब तक क्या क्या बताया है हम लोगों को. मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. अब मार्गट जो उनकी छोटी बहन है, ठीक है, वो भी हॉलैंड चली गई दिसंबर के महीने में. एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी एंड एना फ्रैंक वेंट to the same place in the month of February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. Okay, when जब I was plunked down, झुकी on the table as a birthday present for Margot. I mean, it was the moment of Margot's birthday. उसके जन्मदिन का समय था जब मैं वहाँ पे फरवरी में गई. तो ये चीज़ें हैं जो अब तक अन फ्रैंक ने हम लोगों को बताया है. क्या क्या बताई हैं कि उनके माँ बाप बहुत ही अच्छे, जिनमें पिताजी को वो बहुत मतलब अप्रेज कर रही हैं, बहुत उनकी प्रशंसा कर रही हैं कि बहुत अच्छे पापा हैं वो. और मेरे पापा की जब उम्र 36 साल थी तब उन्होंने मेरी मम्मी से शादी करी थी और उस टाइम मेरे मम्मी की जो उम्र थी वो 25 साल की थी. ठीक है, वो बताती हैं कि उनके फैमिली में और कौन है. तो उनकी एक बहन है जिसका नाम मार्गट है. ठीक है, मार्गट कब पैदा हुई ये उन्होंने बताया है, और ये कब पैदा हुई ये भी उन्होंने बताया है. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे. सी हैज़ गिवन एवरीथिंग. ओके, अब वो बता रही हैं कि उनके पापा जब वो 4 साल की थी तो फ्रैंकफर्ट में वो लोग रहते थे, और 4 साल की जब ये थी तो उस टाइम वो चले गए हॉलैंड, जाके शिफ्ट हो गए. और कुछ समय बाद उनकी मम्मी भी चली गई हॉलैंड जो है सितंबर में. ठीक है, और फिर मार्गॉट जो है और हम दोनों एशन चले गए अपने दादी माँ के घर वहाँ रहने के लिए. फिर कुछ समय बाद मार्गॉट भी हॉलैंड चली गई. दिसंबर का महीना था और फिर मैं फरवरी में गई. और जब मैं फरवरी में हॉलैंड पहुँची तो उस टाइम जो समय था वो क्या था, मार्गॉट के बर्थडे का समय था. ठीक है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन चल रहा था. तो ये चीज़ें अब तक एना फ्रैंक ने हम लोगों को बताया है. आगे हम देखते हैं क्या होता है. Let me erase the underlines first. I started right away at the Montessori Nursery School. Montessori Nursery School. I mean, Anne Frank went at Montessori Nursery School to continue her studies. I stayed there until I was 6. अब ये बताती हैं कि मैं वहाँ पे 6 साल तक रही. ठीक है, जब तक मैं 6 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं वहाँ पे रही. 2 साल की पढ़ाई इन्होंने करी है. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपेरस. ठीक है, अब ये बताती हैं कि इनकी वहाँ पे जो शिक्षक, ठीक है, शिक्षिका जो होती थी वो थी क्यूपेरस. उनका नाम क्यूपेरस था, द हेड मिस्ट्रेस ऑफ मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. और वो हेड मिस्ट्रेस हुआ करती थी उस स्कूल की. तो ये बहुत ही इसेंशियल पॉइंट है हम लोगों के लिए ये जानना कि सबसे पहले आई मीन व्हाट वाज द फर्स्ट स्कूल
where Anna Frank went to proceed her studies. वो कहाँ गई सबसे पहले? तो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में वो जाकर पढ़ाई करने लगी। ठीक है। अब वो बताती हैं कि वहाँ पे जो उनकी शिक्षिका हुआ करती थी उनका नाम क्या है? मिसेस क्यूपेरस, जो कि हेड मिस्ट्रेस हुआ करती थी उस स्कूल की। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी शेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अब एक साल पढ़ाई करने के बाद एना फ्रैंक वहाँ से फिर दूसरे स्कूल में जाने की बात करती हैं। तो वो बताती हैं कि हम दोनों काफ़ी रो रहे थे, आई मीन हेड मिस्ट्रीज एंड आई बोथ वर फॉलिंग विद डाउन पोर ऑफ टीयर्स बिकॉज इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल ऑफ बोथ। दोनों का एक फेयरवेल था क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। होता है अफेक्शन, जब कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर्स हों, रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, when we stay with somebody for some time or a year, so it depends on the affection and dedication of each other, that how much are we dedicated, हम कितना एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड हैं। ये जो संबंध होते हैं ये उन पे निर्भर करता है। तो थोड़ा सा अजीब लगता है व्हेन वी फील द डिपार्चर, जब हम डिपार्ट करते हैं किसी से तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो बच्ची काफ़ी रोती है एने फ्रैंक जब वो 6 साल की होती हैं। अब इन द समर of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. अब एना फ्रैंक बताती हैं कि समर का सीज़न होता है और ये जो टाइम है वो 1941 का है। ठीक है। ग्रैंडमा बीमार पड़ जाती हैं एंड had to have an operation and she was to be operated. उनका ऑपरेशन होने वाला था and this is the reason that is why my birthday passed with little celebration. मेरा बर्थडे जो था वो बहुत अब जाहिर सी बात है, when something is happening unfortunately in the family, so we can't pay attention for the celebration. Okay, हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं कि क्या सेलिब्रेशन है या फिर क्या है, कुछ भी हम ध्यान नहीं देते हैं अगर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश कुछ हमारे परिवार में हो जाता है तो ये बताती हैं कि बर्थडे में मज़ा नहीं आया उस बार। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1922। ठीक है। अब ये एक अनहोनी भी है इनके फैमिली में। ये बताती हैं कि 1942 में, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1941 में उनके दादी माँ की तबीयत ख़राब होती है और फिर 1942 में शी वॉज डाइड, वो मर जाती हैं। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। ये कोई नहीं जानता कि मैं उनको कितना सोचती थी या फिर कितना प्यार करती थी। And this birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. अब ये एक घटना थी एने फ्रैंक के साथ कि इनका जो बर्थडे था उस घटना से काफ़ी प्रभावित हुआ। 1941 में तो ऐसा हो नहीं पाया कि वो उनके साथ बर्थडे को सेलिब्रेट करें बिकॉज सी वॉज टू बी ऑपरेटेड, सी वॉज इल एट दैट टाइम and in the next year 1942 she was died. So it was left a great impact on the pleasure and the celebration of her birthday. So this time she is unable to celebrate her birthday because grandma's candle, okay, grandma's candle was lit along with the rest. उसी टाइम फ्यूनरल का मोमेंट था और उसी टाइम ग्रैंड माँ की जो कैंडल्स थी वो भी जलाई जा रही थी। तो थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा था दैट बोथ सेलिब्रेशन, इट वाज नॉट अ सेलिब्रेशन, डिमाइज ऑफ हर ग्रैंड मदर वाज गोइंग अलॉन्ग विद हर बर्थडे, सो इट वाज लिविंग एन इम्पैक्ट। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था उनका जो बर्थडे था, तो बहुत अच्छा फील नहीं कर रही थी। आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। Let me erase the red line first. The four of us are still doing well: mother, father, Margot, and Anna Frank. And that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. Now, this is the time when she gives importance and she is focused for writing her diary. This is the time of 28th June of 1942, 1942 की ये बात है, 20 जून की, जब वो अपने डायरी को बहुत गंभीर समर्पण के साथ लिखने की कोशिश करती हैं। ये वो टाइम है जब उन्होंने अपने डायरी को अच्छी तरह से लिखना शुरू किया था। अब तक तो ये चल रहा था उनका जो
इंट्रोडक्शन था फैमिली का, कैसे कैसे क्या हुआ, पापा कैसे, मम्मी कैसे, कब हम लोग कहाँ शिफ्ट हुए, पहली क्या स्कूलिंग थी इनकी जहाँ पे इन्होंने एजुकेशन अपना शुरू किया था, वहाँ की हेड मिस्ट्रीज कौन थी, ये सारी चीज़ें अब तक उन्होंने बताया है। बीच में एक दुर्घटना के बारे में उन्होंने बताया है, जो कि उनके दादी माँ की डेथ है, और वो 1941 में बीमार हुई और 1942 में वो मर गई। ये सारी चीज़ें आप जो है ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। देर आफ्टर ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक, वाई डज एन ए प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, वाट टेल्स यू दैट एन ए लव्ड हर ग्रैंड मदर। अब ये दो क्वेश्चन हैं, एंड आई होप स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई फॉर दिस क्वेश्चंस। एनीबडी? Okay, let me answer these questions. Why does Anne provide a brief sketch of her life? पहला क्वेश्चन कि एने फ्रैंक अपने लाइफ का एक ब्रीफ स्केच थोड़ा सा एक्सपैंडेड वे में उन्होंने क्यों दिया, क्यों बताया? बिकॉज it will be easy to understand the story or the sketch of our life from the well beginning for all the readers. Okay, if they do not know the beginning, so they can't understand the ending. Okay, this is very clear concept. अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में शुरू से न जाने तो अंत में जानकर हमें कोई खुशी नहीं होगी, हमें मज़ा नहीं आएगा. ओके, सो for understanding, better understanding, and considering the problems of readers that they will not be facing problems while going through her diary, she gave a brief sketch of her life. अपने जीवन का एक बहुत अच्छा सा और एक्सपैंडेड स्केच उन्होंने दिया, ताकि जो भविष्य में जो रीडर्स इनकी डायरी को पढ़ रहे होंगे वो इनकी स्टोरी को, इनकी डायरी को बखूबी समझ पाएंगे. आई थिंक दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेल्स Next question, that is what tells you that Anna loved her grandmother. Okay, so the incident, that is the death of her grandmother when she was ill in 1941. Anna Frank could not celebrate her birthday perfectly because she was worried about her grandmother's health. Okay, and next thing, when in 1942 her grandma died, she could not pay attention and she could not muster up the courage and pleasure to celebrate her next other present birthday, because it was the funeral, demise for her grandmother. The both thing was going on, together. Candles. Candles. I mean, she was so worried about her, grandma, that she lost her grandmother, and that is why she was not feeling, comfortable to celebrate her birthday. Okay, these are the reasons. अब मुझे लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. तो फिलहाल के लिए इतना ही. अब हम कल पढ़ेंगे अगले चैप्टर से, आई मीन अगले पार्ट से. इस चैप्टर में जो भी होगा उसको हम कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग.